So let's see a question on Indian society topic and urbanization topic. So this question 8, explore and evaluate the impact of work from home on family relationships. So here there are two keywords, explore. So first we'll talk about what work from home is. Like we have to define something about work from home. And whenever there is a question about evaluate, you will tell its positives, you will tell its negatives. So हमारा ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, बहुत इजी है, 10 मार्कर है, हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिवाइड कर लिए हैं, एंडिंग में हमारा एक वे फॉरवर्ड टाइप का आएगा ही, तो हम सेट है कि अब विल बी एबल टू राइट क्विकली. दिस सेव्स योर टाइम ऑल्सो बिकॉज एज सून एज यू डिवाइड द स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट मेरा इस स्ट्रक्चर में इसके नीचे जाएगा. इफ देर इज अ फैक्ट प्रोबेबली वो इंट्रोडक्शन में जाएगा, ना कि पॉजिटिव्स में. बट अगर कोई फैमिली से रिलेटेड बात है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स, तो यू विल मेंशन इट हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव में. सो लेट्स लुक थ्रू एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट. तो अब सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय एन इंट्रोडक्शन. मेरा इंट्रोडक्शन प्रोबेबली वुड हैव बीन अराउंड अ फैक्ट बिकॉज वर्क फ्रॉम होम बहुत यूज में था कोविड के बाद, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस. So I think there was some news report which had said that 82% of people in a survey have preferred work from home, and according to XYZ report. So I would have said this as my introduction, and then because the explore वाला part हम करते, heading explore नहीं होती, but I would have just mentioned work from home, and I would have said what work from home means. So work from home means you would have given a basic definition, not a technical or a complex definition, but something like work from home means the working space and your job location is different, and you do not need to visit the office space. इस टाइप का कुछ एक basic definition देके एक्सप्लोर में आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन राइट अबाउट how the concept of workation, we've been hearing this, so this is also coming. तो वर्क फ्रॉम होम को आप और आगे ले जाके ये भी मेंशन कर सकते हो बिकॉज इट्स अबाउट एक्सप्लोरेशन. वर्क फ्रॉम होम का आपने बेसिक डेफिनेशन दिया, यू विल मेंशन अबाउट वर्केशन, यू विल मेंशन अबाउट हाउ विमेन have been, अगर कोई ऐसा फैक्ट या फिगर आपके पास है जिसमें ये है कि women have been opting more for work from home or something like this, you can mention that. So women का पर्सपेक्टिव ला सकते हो. बाकी आप कोविड का डेफिनेटली मेंशन करोगे यहाँ पर. कोविड-19 had led to forced work from home, right? So forced work from home हुआ because अभी वॉलेंट्री नहीं है. So कोविड-19 के बाद एक इनवॉलेंटरीनेस आ गया था, बट मेजरली अभी भी वर्क फ्रॉम होम एक वॉलेंट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि वो वॉलेंट्री है मेजरली. फिर उसके बाद जब हमने एक्सप्लोर कर लिया है, नाउ वी विल गो ऑन इवैल्यूएशन. सो वी विल मेंशन व्हाट आर द पॉजिटिव्स फर्स्ट. I would suggest always mention the positives work first rather than mentioning the negatives, because then that's a flow. You will tell positives, you will tell negatives, and then you will tell a way forward based on those negatives. So आपके positives होंगे. अब आप positives को being from a non-sociological background, आप 4-5 तरीके से सोच सकते हो. Like what could be the dimensions? जब भी हम family relationship की बात कर रहे हैं, we talk about children, we will talk about education, we can talk about marriage, adults. Here we will talk about husband-wife relationship, we can talk about elderly, you could mention about family relationship है तो structure of family क्या है उस पे भी बात आती है, structure. सो हियर अब हमें कितना इजी हो गया पॉजिटिव्स बनाना. हम पॉजिटिव्स क्या बना सकते हैं, अगर चिल्ड्रन के लिए अगर माँ बाप घर पे रह रहे हैं तो इट इज बेटर सोशलाइजेशन, ठीक है. एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, होम स्कूलिंग बढ़ रही है, यू कुड मेंशन दिस फीचर.
or you could just write down ki parents are able to focus more on their child's education now. They're able, home tuitions बढ़ रहे हैं, like or you could just write that decrease in tuitions because parents are now teaching their children. So this is just your interpretation. Don't think that it needs to be a fact. But if you feel you have seen this change, you can write it here. Marriage कैसे change हो रही है कि they are getting quality time together. फैमिली को क्वालिटी टाइम मिल रहा है, तो इसकी वजह से पीस बढ़ रहा है फैमिली में, या यूनिटी बढ़ रही है, इस टाइप का कह सकते हैं. एल्डरली की बेटर केयर हो पा रही है, ठीक है. एंड स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, आप बोल सकते हो कि क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो जो मैरिड कपल्स माइग्रेट करते थे वर्क के लिए, दैट इज नॉट हैपनिंग. सो यू कैन प्रॉब्ली राइट दैट जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स, joint family because decrease in migration for work. So this becomes like your positive thing, and then you will move towards negatives. आप similar dimension में भी उसको divide कर सकते हो, और else very clear negatives की क्या क्या हो रहा है. Now people coming from sociology will mention the word alienation here or anomy here. There is no harm in mentioning. Alienation is a very common alienation, or stress or strained relationships, because the question was about family relationships. So you have to mention how the equation is. Strained relationships because personal versus professional boundaries have been blurred boundaries. What else you could write? You could write increase in diseases because of sedentary lifestyle. Because आप कोई movement नहीं है, office going नहीं हो आप, तो probably आपकी lifestyle जो है sedentary हो रही है. Now here you will bring a women perspective also. Women, हमने कोविड के टाइम सुना था कैसे शैडो पैंडेमिक आ रही है. Why was that? Because the males were no more going out for work and they were staying at home. So the time that a woman used to get with herself or her friends, to be able to socialize or to be able to communicate her stress was gone. Now she was bound in a home with people, with men who were not going out of their homes. So probably you will write a very big negative here, and this could be like your second or third point in fact, that women increased care work. Because now care work. Or you could write here one more point, that patriarchal institutions leading to less outward migration. So these are the negatives you could mention. If there are 4-5 other negatives, you can mention them also. And after this negative and positive, you will give a conclusion or like a way forward, that conclusion would be that work from home should be voluntary, and it should be probably balanced. So in the sedentary lifestyle wala thing, you can also mention how internet and online work is harming, is creating diseases from your eyes or your back. So you can mention all these little things also there in examples here, and this will be like your ending. So Indian society के questions dynamic होते हैं, and you have the opportunity to write your own personal examples. So write them, and then just mention whatever structure you want to create. First create a structure, उसके अंदर points लिख के आप examples अपने personal दे दीजिए.